Hey guys, good morning to all of you. What's up? क्या हाल चाल कैसे हो आप सब बढ़िया एकदम चलो we are late a little bit I guess but we can go ahead. So guys I can see हम लोग last lecture में sensitivity complete कर चुके थे. Let me check whether my volumes and everything is all correct guys and then I can start please. Are we there online? Are you able to listen to me guys? Too good. चलो. So I guess you are able to watch me properly, see me properly, and we can start with today's session. ठीक है ना? अब मैं क्या कह रहा था कि चलो. So good morning to all of you once again. I hope you are able to watch me properly and see everything properly. And guys, you are also able to what? Listen to me properly. So we are all set for today's session. And in the last session, I can understand मैंने टिक मार्क किया हुआ है कि guys हम लोगों ने मीशो मीशो जयश्री गुड मॉर्निंग आई कैन सी लास्ट सेशन में हम लोग ने सेंसिटिविटी कंप्लीट कर दिया था सेंसिटिविटी के दो क्वेश्चन किए थे सिनारियो का भी एक क्वेश्चन किया था तो सेंसिटिविटी के दो क्वेश्चन सिनारियो का एक क्वेश्चन एंड गाइस हम लोग ने सिमुलेशन का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था डू यू रिमेंबर दैट ऑल सो वी आर डन विद सेंसिटिविटी वी आर डन विद सिनारियो एंड वी आर डन विद सिमुलेशन का एक क्वेश्चन सो give me 2 minutes I'm just setting up things too good chalo all set now what am I looking at is guys I'm looking at one more question जो simulation पे है but basically वो question ऐसे simulation से connected नहीं है but this question is very interesting so can we start with that question guys and that is going to be question number 26 चलो this is going to be a fab question huh? So question number 25 हम लोग complete कर चुके थे I'm looking at question number 26 if you all are ready too good Jayashree good morning to you Payal good morning to you question number 26 guys first Jumble Consultancy Group has determined relative utilities of cash flow of two forthcoming projects of a client company which is as follows
सो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर गाइस हम लोग को दिया गया है रिलेटिव यूटिलिटीज कनेक्टेड विद द कैश फ्लो. सो योर यूटिलिटी गाइस, अगर अपना 12th स्टैंडर्ड आपको अगर थोड़ा याद आता हो ना, तो 12th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि गाइस व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन. सो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कैश फ्लोज के साथ यूटिलिटीज कनेक्ट करके दी हुई है. So what are we required to do is, when they have given you the cash flows and when they have given you the utilities, what are we going to do now is we are going to decide on the project not based on cash flow but decide on the project based on utility. So every cash flow के साथ associated utilities दिए गए, तो आपका decision guys cash flow पे based नहीं होना चाहिए, आपका decision based होना चाहिए utility पे. So let us have a look at it. Cash flow can be minus 15,000, cash flow can be minus 10,000, cash flow can be minus 4,000, cash flow can be 0, cash flow can be 15,000, cash flow can be 10,000, cash flow can be 5,000, or cash flow can be 1,000. The utilities. So if you get a minus 15,000 ka cash flow, your utility is minus 100. If you get 10,000 ka cash flow, minus 10,000 ka cash flow, then utility is minus 60. If you get a cash flow of minus 4,000, your utility is not minus 3. Please make a small change. Small correction, it is not minus 3, it is minus 30. If you get a cash flow of 0, your utility is 0. If you get a cash flow of 15,000 positive, then your cash flow is 40. If you get a utility of 10,000, then your utility is 30. If you get a cash flow of 5,000, then your utility is 20. And if you get a cash flow of 1,000, then your utility is 10. So these are the different utilities attached with different cash flows. And I'll remind you, यहाँ पे जो selection होने वाला है, that will be based on the utility and not the cash flow. ठीक है? Now there are two projects. The distribution of cash flow of project A and project B is given to you. Project A can have a cash flow of 15,000. Project A can have a cash flow of minus 10,000. Can have a cash flow of 15,000. Can have a cash flow of 10,000. Can have a cash flow of 5,000. And the probabilities that are given to you is 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1. And then they are going ahead and they are giving you project B ka cash flow can be minus 10,000, minus 4,000, minus 15, nahin, plus 15,000, plus 5,000, plus 10,000, and they have given you the probabilities. Now they are asking you which cash flow should be selected and why. Now again I'll repeat, इस question के अंदर हमारा selection based on cash flow नहीं होने वाला है, हमारा selection based on utility होने वाला है. Perfect है. तो आपका selection हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं. So this is my advanced capital budgeting का session जो last lecture से हम लोग ने चालू किया था, पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं I guess. So we'll be solving question number 26. Chali, I hope you guys are ready with solving question number 26, guys. है ना? Too good. So question number 26. Guys, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे project A की. So this is going to be my project A. Guys, they have given me cash flow. मैं cash flow से connected उसकी utility कर लूंगा और guys उसके बाद उसका probability आ जाएगा and then we'll have utility dot the probability. Are we exactly clear with that? Thank you. Perfect. Okay. My cash flow can be minus 15,000. My cash flow can be minus 10,000. My cash flow can be plus 15,000. My cash flow can be plus 10,000. My cash flow can be 5,000. And what have they given to you in the question is हर एक cash flow के साथ attached उसका utility. चकास है. So minus 15,000 का utility कितना है? Minus 15,000 का utility है minus 100. Minus 10,000 का utility है minus 60. 15,000 plus का utility है 40. 10,000 plus का utility है 30. 5,000 plus का utility है 20.
और अब ये सारे कैश फ्लो के साथ अटैच उसका प्रोबेबिलिटी था. सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.1, the probability is 0.2, the probability is 0.4, the probability is 0.2, and the probability is 0.1. Are we exactly clear with that? Guys, next one is 100.1 is minus 10, 60.2 is minus 12, 40 into 0.4 is going to be 16, 30 into 0.2 is going to be 6, 20 into 0.1 is going to be 2. So guys, now let's start doing the calculation. Rohit, good morning. So guys, आपका calculation होना चाहिए minus 10, minus 12, plus 16, plus 6, plus 2. So overall, you are getting a utility of only 2 out of this project. Are you getting a utility of only 2 out of this project, guys? Perfect, no? Too good. Fantastic. This is project A. Now we are going to go on project B. Cash flow, utility, probability, utility dot the probability. So guys, the cash flow is going to be how much? Project B की बात कर रहा हूँ अभी मैं. So guys, project B का cash flow can be minus 10,000. Project B का cash flow can be minus 4,000. Project B का cash flow can be 15,000. Project B का cash flow can be 5,000 and project B का cash flow can be 10,000. जकास है. Guys, minus 10,000 का utility है. Minus 10,000 का utility है minus 60. Minus 4,000 का utility है minus 30. 15,000 प्लस का यूटिलिटी दिया था 40. 5,000 प्लस का यूटिलिटी दिया था 20 और 10,000 प्लस का यूटिलिटी दिया था 30. Now utility multiplied by the probability is going to be 0.1, the probability is going to be 0.15, the probability is going to be 0.40, the probability is going to be 0.25, and the probability is going to be 0.10. 60 into 0.1 is going to be minus 6. 30 into 0.15. So 30 into 0.15 is going to be 4.5. 40 into 0.4 is going to be 16. Guys, 20 into 0.25 is going to be 5. And 30 into 0.1 is going to be 3. So guys, the calculator is going to be minus 6 plus 4.5 plus 16 plus 5. 4.5 plus नहीं होगा, minus होगा. So it's minus 6 minus 4.5 plus 16 plus 5 plus 3. I'm getting a total answer of 13.5. Are you getting a total answer of 13.5, guys? Jakas hai. So this is my answer for project B in terms of utility. So guys, finally हमारा decision आ जाना चाहिए. So decision is, guys, किसका utility ज़्यादा है? Project B का utility ज़्यादा है, तो हमारा decision होना चाहिए कि project B should be selected. Project B should be selected. Tell me, Jakas hai? So this question को basically we'll not call it a simulation also, but this question was very typical, very different in the terminology कि ये question में हमें जो decision लेना था was based on utility. So basically हमने क्या किया, utility को importance दी and then utility multiplied by the probability की. Are we exactly clear with this? Too good. Rohit. Sir, this is my first class of capital budgeting. I have already completed SFM from an academy, hence trying to catch up with the class. Rohit, this is our 11th class of capital budgeting. You might find it a little bit tough to understand, to be frank, because we have been continuing this like this for 2 weeks now. Chalo. Guys, we are going to go ahead with question number 27 के पहले एक नया logic, and that is going to be decision tree.
ठीक है. So decision tree. Now what is decision tree? So guys, this is the last kind of a risk analysis की understanding. So risk analysis में हम लोग ने बहुत कुछ देख लिया है एंड ये अब लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं. तो अगर मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक पे लेके जाऊँ तो रिस्क एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे इन कैपिटल बजटिंग. तो रिस्क एनालिसिस में हम लोग ने काम कर लिया है प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी के बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी कंप्लीट हो गया. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कंप्लीट हो गया. RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी कंप्लीट हो गया. RADR के हिसाब से RADR दैट इज RK इज इक्वल टू RF प्लस N प्लस DK. Certainty equivalent approach, that is uncertain cash flows multiplied by certainty coefficients will get certain cash flows. Sensitivity, एक factor को change करो and then try to analyze which factor is more sensitive. Scenario will change lot of factors together. Simulation will create runs, will give the numbers like a housey. And the last thing that on risk analysis we are doing is known as a decision tree. So अब last part पे आ रहे हैं decision tree. Decision tree is a kind of a graph. It's kind of a graphical representation how the decision will be taken. So scenario हो गया, simulation हो गया, decision tree हो गया. So decision tree is a graphic display of relationship between the present decision and the future events, future decisions and consequences. So decision tree is a graphic presentation of arriving at a particular decision. Arriving at a particular decision. Full stop. Points to remember. Points to remember. Now, what are the points that we have to remember while making a decision tree? Guys, one, diagram is drawn from left to right. Diagram is drawn from left to right. So this is the way the diagram is drawn from left to right. So left to right हमें diagram draw करना है. Are you exactly clear with this one? And guys, second, so diagram is drawn from left to right. Calculations are done. Calculations are done from right to left. So diagrams left to right draw करना है, but calculations right to left करना है. वो आपको पता चलेगा हम कैसे करेंगे. So diagrams को left to right draw करना, but calculations को left to right draw करना. Are you exactly clear with this? Too good. Guys, third is diagrams are drawn from left to right हो गया. Calculations are done from left to right to left हो गया. This is amazing. This is fantastic. Guys, this square block is known as decision node. Is known as decision node. And guys, this circle is known as chance node. So diagrams draw करते वक्त हमें decision node की जरूरत पड़ेगी, हमें chance node की जरूरत पड़ेगी. Point number 5. There can't be decision node after decision node. एक decision node के बाद दूसरा decision node नहीं आ सकता है. Are we exactly clear with that one? Basically, the understanding that you need to remember is decision के बाद decision नहीं and chance के बाद chance नहीं. So there can't be decision node after decision node. There can't be chance node. There can't be chance node after chance node. There can't be decision node after decision node. There can't be chance node after chance node. Are you catching this up very well, guys? Decision node के बाद decision node नहीं, chance node के बाद chance node नहीं. As simple as that. Guys, point number 7.
after decision node, there should be chance node. There should be chance node, and after chance node there should be decision node. There should be decision node. डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं, चांस के बाद चांस नहीं, डिसीजन के बाद चांस, चांस के बाद डिसीजन. सो दिस इज डिसीजन. डिसीजन के बाद आएगा चांस, चांस के बाद आएगा डिसीजन. सो ये फ्लो होना चाहिए, ये लॉजिक फ्लो होना चाहिए. प्लीज रिमेंबर, डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं, चांस के बाद चांस नहीं. Are we exactly clear with this one? Jayashri, are you catching this up? Rohit, are you catching this up? And Payal, are you catching this up very well? So diagram is drawn from left to right. Diagram कैसे draw करना है? From left to right. Calculations कैसे करने हैं? From right to left करने हैं. Decision node होना चाहिए, chance node होना चाहिए. There can't be decision node after a decision node. There can't be a chance node after a chance node. After decision there should be a chance node, and after the chance node there should be a decision node. Decision के बाद decision नहीं, chance के बाद chance नहीं, decision के बाद chance, chance के बाद decision. ये strategy continue रहना चाहिए. Guys, next is point number 8 that you need to remember. There is always one decision, one base decision. एक decision हमें always एक साथ में लेके चलना है. What is that one base decision जो हमें साथ में लेके चलना है? वो ये है, that is not to go ahead with project. Not to go ahead with project. एक डिसीजन ऑलवेज हमारे साथ में लेना है, क्योंकि हमें चांस बनाना है, हमें एक डिसीजन लेना है. एंड एक डिसीजन ऑलवेज एक बेस डिसीजन हमारे साथ में चलना चाहिए. एंड दैट बेस डिसीजन जो हमारे साथ में चलना चाहिए वो ये है कि, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, नॉट टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट. सो अगर आप ये 8 पॉइंट याद रखते हो तो यू आर वेरी मच थ्रू योर चैप्टर. बट यू नीड टू रिमेंबर दिस 8 पॉइंट्स. व्हेन यू रिमेंबर दिस 8 पॉइंट्स, यू आर डन विद द चैप्टर. क्लासिक, क्लियर, झकास एकदम, कोई डाउट्स नहीं. Too good. When we'll go ahead with the chapter, we'll understand it far better. But first, let us go ahead with it. So this is the decision tree. Drawing करना है, drawing left से right करना है, calculations right से left करेंगे. Decision node square block, chance node circle. Decision के बाद decision नहीं, chance के बाद chance नहीं, decision के बाद chance, chance के बाद decision. And guys, एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमारे साथ ऑलवेज रहेगा इज नॉट टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट. ठीक है, ये 8 पॉइंट्स याद रखिए, तो मैं आगे का चैप्टर आपको साथ में करा सकता हूं. सो दिस इज डन विद माय बेसिक्स. नाउ लेट मी पिक अप अ क्वेश्चन. सो गाइस, लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27 पे पहले मत जाइए. Go on question number 28. So I'll go on question number 28 first, guys, not 27. ठीक है. So this is where I'll pick up my question number 28. और मैं है ना थोड़ा स्लाइड बड़ा करूंगा इसमें. Question number 28. अभी क्लियर? चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. A heavy duty tilting machine is to be installed at Bhadra coal mines. Manager projects of that mine is evaluating a land for its installation. He is considering 2 alternatives. To conduct a soil test costing 25,000, to find the nature of underlying soil and decide to install or not, to start installations on without any soil test. Next one. The effect of installation can lead to 3 possible types of performance of machine during its operation. Good performance, there will be no breakdown or failure. Moderate performance, there will be frequent minor breakdown but no major breakdowns. And bad performance will have frequent major breakdowns. If the machine is installed without conducting a soil test, the probability of the performance of the machine is expected to be as follows. Good performance, 0.2 probability. Moderate performance, 0.3 probability. Bad performance, 0.5 probability. If the manager conducts a soil test, the underlying soil in this case may be one of the following type. It can be filled soil, it can be soft soil,
It can be rock soil. Rock soil is best for the installation of heavy machineries. The probability to find the different types of soil are: filled soil is 0.3 probability, soft soil is 0.4 probability, and rock soil is 0.3 probability. Probability of the performance of the machine if installed on this soil. If you put it on filled soil, if you put the machine on the filled soil, probability of good performance is only 0.05, moderate performance is 0.15, and bad performance is 0.80. Soft soil, good performance is 0.30, moderate performance is 0.40, and bad performance is 0.30. Rock soil, good performance will be 0.60 probability because rock soil is the best soil to install the machine. Moderate performance is 0.30 and bad performance is 0.10. The present value of incomes associated with the performance of the machine are as follows. If there is a good performance, present value of income, that is NPV already given to you. Good performance will get 2 lakh rupee. Moderate performance will be 80,000 and bad performance will lose 50,000. You are required to draw the decision tree diagram and find out the alternative which manager project should select. Wow, lovely, lovely, absolutely beautiful question, guys. So let's have a look at this question very, very carefully. क्या कहा गया है? एक मशीन सेट करना है. कहाँ सेट करना है मशीन? भद्र कोल माइंस में एक मशीन सेट करना है. इट इज हेवी ड्यूटी टिल्टिंग मशीन. वो क्या होता है हेवी ड्यूटी टिल्टिंग मशीन? आई ऑल्सो डोंट नो, बट आई नो देयर इज अ मशीन व्हिच हैज टू बी सेट इन भद्र कोल माइंस. अब जो मैनेजर है, ही इज डिसाइडिंग शुड ही कंडक्ट अ सॉइल टेस्ट, एंड सॉइल टेस्टिंग करने में 25,000 रुपीज का खर्चा होगा. सॉइल टेस्ट करके वो डिसाइड करेगा कि उसे मशीन लगाना या मशीन नहीं लगाना. या सेकेंड ही कैन डू इज, let's not have a soil test and let's put the machine directly without any soil test. Try to put the kind of a diagram into your brains, you know, कि हम start कर रहे हैं भाई. पहले क्या करेंगे? डिसाइड करते हैं सॉइल टेस्ट कराना है कि सॉइल टेस्ट नहीं कराना है. और एक डिसीजन तो अपने पास इनहेरेंटली होना चाहिए कि चलो कुछ भी नहीं करते, सॉइल टेस्टिंग भी छोड़ दो, नहीं भी छोड़ दो, मशीन ही नहीं लगाते. नॉट टू डू. एक इनहेरेंट डिसीजन आपके पास ऑलवेज रहना चाहिए. वन इनहेरेंट डिसीजन शुड ऑलवेज बी देयर विद यू, इज नॉट टू डू. सो लेट्स नॉट इंस्टॉल. Are we exactly clear with the point? Let's not install. Jakas? Too good? Okay. The effect of installation can lead to 3 types of possible performance of the machine. So the effect to install can lead to 3 types of possible performance. So अगर आप machine install करेंगे, there are 3 performance. There can be a good performance, there can be a moderate performance, and there can be a bad performance. So if you install the machine, there can be a good performance, there can be a bad performance, there can be a moderate performance. Guys, if you install the machine without any soil testing, so अगर आप soil testing करी नहीं और आप machine install कर दिए, तो good performance का probability 0.2 है, moderate का probability 0.3 है और bad का performance 0.5 है. अगर आप soil test कराते तो 3 टाइप के soil निकलेंगे: filled soil, soft soil, rock soil. उसका प्रोबेबिलिटीज दिया गया है. फिर फिल्ड सॉइल के अंदर परफॉर्मेंस गुड, मॉडरेट, बैड. सॉफ्ट के अंदर गुड, मॉडरेट, बैड. रॉक के अंदर गुड, मॉडरेट, बैड. And then they have given you NPVs. If the performance of the machine is good, it will be 2 lakh. If the performance of the machine is moderate, the NPV will be 80,000. And if the performance is bad, the NPV will be minus 50,000. You are required to draw the decision tree. That is the point number 1. Let's draw the decision tree. And second one, find out the alternative which manager should select. Classic F. Too good. So have a look here. How do we start? So it starts with a decision node. Always the question starts with a decision node. So guys, I'll take the help of this kind of a diagram. And this is my decision node. And standing here, standing on the first day and deciding, क्या decide करना है? Soil test करना है, soil test नहीं करना है, या तो install ही नहीं करना है. एक inherent decision तो अपने पास रखना ही रखना. What is that inherent decision that you should keep is not to install. So guys, starting, I have got 3 decisions. Decision number 1, decision number 2, and decision number 3. What are these 3 decisions? Sir, क्या है ये 3 decision? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये 3 decisions. This is decision number 1.
दिस इज डिसीजन नंबर 3, डिसीजन नंबर 2 हमने बीच में लिया है। सो गाइस डिसीजन नंबर 1 है मेरा नो सॉइल टेस्ट, नो सॉइल टेस्ट, सॉइल टेस्ट ही नहीं करवाते और सीधा इंस्टॉल कर देते। हाउ अबाउट दैट? सॉइल टेस्ट नहीं करवाते हैं और सीधा इंस्टॉलेशन चालू कर देते हैं। यहाँ पे सॉइल का टेस्टिंग करवाएंगे और गाइस यहाँ पे होगा नॉट टू इंस्टॉल। ये डिसीजन बहुत क्लियर है, लेट्स नॉट इंस्टॉल ओनली, नॉट टू इंस्टॉल। एंड गाइस इफ यू डोंट इंस्टॉल, थोड़ा बड़ा कर देता हूं बिकॉज ये पूरा एक डिसीजन है। So if you don't install, so this is what I'm saying, not to install, not to install. This is one inherent decision that you should always have with yourself. And if you not install, your NPV will be nil. आपका NPV 0 होगा अगर आप इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। अगर आप मशीन इंस्टॉल नहीं करते तो your NPV will be 0. The first one is will install without any soil test. द सेकेंड वन इज, तो यहाँ पे वापस एक बार एक बरोबर से लिख रहा हूँ, मेरा राइटिंग थोड़ा उल्टा फुल्टा आ रहा है बिकॉज वैसे ही लाइन बना रहा है। So no soil testing. I'll not conduct any soil test and I'll start installing. I'll do the testing and then I'll plan to install. So decision circle, square is a decision node. कौन से डिसीजन लेना है? बिना टेस्ट किए इंस्टॉल कर दूं या टेस्टिंग के बाद करूं या इंस्टॉल ही नहीं करूं? दिस इज डिसीजन। अब डिसीजन के बाद डिसीजन नोड नहीं आना चाहिए, डिसीजन के बाद आना चाहिए चांस नोड। डिसीजन के बाद आना चाहिए चांस नोड। सो देखो मैं चांस बना रहा हूं अभी। व्हाट इज अ चांस गाइस? अगर मैं सॉइल टेस्ट ही नहीं कराता हूं, सॉइल टेस्ट ही नहीं कराता हूं, सो यहां से चालू हुआ था टू कंडक्ट द सॉइल टेस्ट 25,000, वो अलग है। To start the installation without soil test, so I'll install the machine without any soil test. There can be good performance, moderate performance, and bad performances. So if I start the installation without any soil test, there can be good performance. This is chance node. This is chance node. ठीक है, ब्लू कलर को हम डिसीजन नोड देते हैं, ऑरेंज कलर को हम चांस नोड देते हैं। So there's a chance. So if you don't conduct the soil test and install the machine, there is a chance. And what is the chance? The chance says, मेरे को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब कुछ रुक जाइए, इसको नीचे लेके आता हूं, इसको नीचे लेके आता हूं और इसको यहां पे टच करता हूं। Perfect. So what is the chance now? The chance now is that you can have good performance, you can have good performance, you can have moderate performance, or you can have bad performance. You can have good performance, you can have moderate performance, और you can have bad performance. ये 3 performances possible है। Are we exactly clear with that one? Yes, Jayashree, absolutely fantastic. We can have a good performance, moderate performance, and a bad performance. Good performance का probability is 0.2. So guys, we can have something which is known as good performances, or good performances का probability they have given to is 0.2. We can have moderate performances का probability is 0.3, so we can have moderate performance and the probability is 0.3. We can have a bad performance and the probability is 0.5.
Do you agree with that? Guys, if the performance is good, you will have an NPV of 2 lakh. You will have an NPV of 2 lakh. If the performance is moderate, you will have an NPV of 80,000. And if you have a performance which is bad, you can have an NPV of minus 50,000. Tell me, are you catching this up very, very well? If the performance is good, your NPV can be 2 lakh. If your performance is moderate, your NPV can be 80,000. And if your performance is bad, your NPV is minus 50,000. So you don't test the soil. Soil test करते ही नहीं और soil test किए बिना install कर लेते और install करेंगे तो good performance का probability is 0.2, moderate performance का probability is 0.3 and bad performance का probability is 0.5. Tell me, clear? Jayashri, are you clear till here? Rohit, are you clear till here? Yes. नाउ लेट्स गो फॉर सॉइल टेस्टिंग. अब एक चीज तो याद रखना कि अगर आप सॉइल टेस्ट कराओगे तो सबसे पहले आपके 25,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा. सो इफ यू टेस्ट द सॉइल देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ 25,000. सो 25,000 रुपए का खर्चा हो गया और हम सॉइल टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. और अब यहाँ पे ये चांस आएगा, डिसीजन नहीं आएगा गाइस. डिसीजन के बाद डिसीजन कभी नहीं आता है. प्लीज रिमेंबर, डिसीजन के बाद ऑलवेज चांस आता है. So now there's a chance. What is the chance? Guys, the chance is you can have 3 types of soil. You can have 3 types of soil. 1, you can have 2, or you can have 3. You can have 3 types of soil, I am saying. 3 types of soil. Are we exactly clear with that one? Now, what are the 3 types of soil you can have? Guys, you can have fill soil, soft soil, rock soil. अब आप टेस्टिंग करा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप के सॉइल आ रहे हैं. You can have fill soil, you can have soft soil, you can have rock soil. Rock soil is the best for installing the machine. The probabilities are, आपको filled soil मिले जिसका probability आपका 0.3 है, आपको soft soil मिले जिसका probability आपका 0.4 है, और आपको rock soil मिले जिसका probability आपका 0.3 है. Do you agree with this? Tell me guys, are you catching this up very, very well? Fantastic. Now this is where my fundamental basics will come into the picture. चांस के बाद चांस नहीं, डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं, चांस के बाद चांस नहीं. सो चांस टेस्टिंग कराई, 25,000 का खर्चा कराया, फिल सॉइल आया. अब फिल सॉइल आया तो फिल सॉइल आने के बाद चांस नहीं. फिल सॉइल के बाद यहाँ पे लोग फंस जाते हैं. दिस इज वेयर द डिसीजन ट्री गोज रॉन्ग. सो व्हाट विल दे डू? सर अगर फिल सॉइल आएगा तो परफॉर्मेंस कैन बी गुड, मॉडरेट एंड बैड. नो, आफ्टर चांस there cannot be a chance node. चांस के बाद चांस नहीं, डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं. प्लीज रिमेंबर दैट. चांस के बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद चांस. विल यू रिमेंबर दैट? यस और नो? फैंटास्टिक, क्लियर एकदम. तो गाइस अब यहां पे हमारे पास आएगा एक डिसीजन. कौन सा डिसीजन आएगा वही तो मैं आपको बताऊंगा. हमारे पास आएगा एक डिसीजन. हमारे पास आएगा, दिस इज द डिसीजन, दिस इज द डिसीजन एंड दिस इज द डिसीजन. अब कौन सा डिसीजन आ रहा है हमारे पास? विच डिसीजन आर वी टॉकिंग अबाउट सर? गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन. अगर फिल सॉइल आएगा तो टू इंस्टॉल और अ बेस डिसीजन विथ यू, नॉट टू इंस्टॉल. To install or not to install means you will have 2 decisions here. And what are the 2 decisions here is, should we install or should we not install?
to install or not to install. Similarly, you will have two decisions here also, to install or not to install. अगर ये आप कैचअप कर लोगे तो everything goes very right with you. And third decision is again the same, to install or not to install. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन, मतलब यहीं पे अगर हम लोग डायग्राम में मिस्टेक कर सकते तो यहीं पे मिस्टेक हो सकती है. And this is where you need to remember that after every decision there has to be a chance, and after every chance there has to be a decision. So guys, यहाँ पे हमारा बेस डिसीजन आ जाएगा. फिर से एक बार, क्या इंस्टॉल करना है? So this is install and this is not to install. This is install. This is not to install. This is install. This is not to install. Now guys, if you don't install, then you are already at minus 25,000 of NPV. If you don't install, you are at minus 25,000 of NPV. If you don't install, you are at minus 25,000 of NPV. Tell me, are you catching this up very, very well? Fantastic ना जयश्री. अगर फिल सॉइल आएगा तो हम सोचेंगे इंस्टॉल करे कि नहीं करे. अगर सॉफ्ट सॉइल आएगा तो इंस्टॉल करे कि नहीं करे. अगर रॉक सॉइल आएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि हम इंस्टॉल करे कि नहीं करे. दैट्स वेयर द डिसीजन इज गोइंग टू बी, टू इंस्टॉल और नॉट टू इंस्टॉल. टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेरी वेल? पक्का ना? Too good. Now guys, if you don't install, I'll repeat again, if you don't install, definitely your NPV is going to be minus 25,000 because 25,000 का खर्चा करा चुके हो आप सॉइल टेस्ट कराने का, तो वो तो गए. अब अगर हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, अगर हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, so there's a chance. There's a chance. There's a chance. There is a chance. Now what is the chance here? Decision के बाद decision नहीं आना चाहिए. Decision के बाद always chance आना चाहिए. This is where you are going to remember all these things very well with you. Now what is the chance? अब ये minus 25,000 मैं थोड़ा अंदर लिख लेता हूँ because this is where I want to improve the presentation of my diagram. And mind you guys, you are drawing a decision tree. So if you are drawing a decision tree, minus 25,000, your diagram should look good. Of course, you cannot add colors like me in your examination, but still it should look good. So what is the chance now? So if you install, there's a chance that there can be good performance, there can be moderate performance, there can be bad performance. So there's a chance now that there can be good performance. There can be good performance. There can be moderate performance. There can be moderate performance. And guys, there can be bad performance. And there can be bad performance. These are the three possibilities we can have. Do you agree with that? There can be good performance, there can be moderate performance, there can be bad performance. Similarly, again, if you have a soft soil and you do it, there can be good performance. There can be good performance. There can be moderate performance. There can be bad performance.
Got this, guys? Possibility समझ रही है? Too good. Absolutely fantastic. There can be good performance. There can be moderate performance. There can be moderate performance, or there can be bad performance, or there can be the bad performance. So there can be good performance, there can be moderate performance, or there can be bad performance. Tell me, are you catching this up? Good, moderate, bad, good, moderate, bad. Tell me, are you catching this up very, very well? Lovely. Guys, now what is the possibility that filled soil mein there's a good performance, only 0.5 ka probability. So good performance ka probability is only 0.05. Guys, moderate ka performance is only 0.15. So moderate ka performance is only 0.15. And guys, bad ka performance is 0.80. Guys, filled soil nahi, soft soil mein good performance is 0.30. Moderate performance is 0.40. Good performance is 0.30 again. Are we exactly clear? 0.30, 0.40, 0.30. And guys, last one, the good performance is 0.60 because it is a best soil, rock soil. Moderate performance is 0.30, so moderate performance is 0.30. And guys, bad performance is 0.10, so bad performance is 0.10. Are we understanding this fabulously well? पक्का? जस्ट सिंपली दो चीज याद रखोगे ना तो डिसीजन ट्री बनाने में बहुत मजा आएगा. एंड व्हाट इज द टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर टू ड्रॉ अ डिसीजन ट्री? गाइस, डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं, चांस के बाद चांस नहीं. आफ्टर एवरी डिसीजन देयर इज अ चांस, आफ्टर एवरी चांस देयर इज अ डिसीजन. डिसीजन के बाद डिसीजन नहीं, चांस के बाद चांस नहीं. सिंपल एज दैट. परफेक्ट है, एकदम क्लियर. टू गुड. सो गाइस, अब अगर गुड परफॉर्मेंस आएगा तो योर एनपीवी इज 2 लाख. नो, योर एनपीवी इज नॉट 2 लाख. योर एनपीवी इज 1,75,000. क्यों सर 1,75,000? बिकॉज अगर आपको याद हो तो आपका 2 लाख का एनपीवी तो आ रहा है, बट आपने सॉइल टेस्टिंग में 25,000 रुपए का खर्चा कर दिया है. Similarly, moderate में guys, we'll have 80,000 minus 25,000. 80,000 minus 25,000, you will have 55,000. And guys, third one is minus 50,000 minus 25,000 is minus 75,000. So you will have good performance ka NPV at 1,75,000, moderate performance ka NPV at 55,000, bad performance ka NPV at minus 75,000. Good performance का NPV at 1,75,000, moderate performance का NPV is 55,000, bad performance का NPV is at minus 75,000. Tell me guys, are you catching this up very, very well? You're seriously catching this up very, very well. Too good. Chakas. Fantastic. Great. So guys, this is your decision tree. This is your diagram with reference to decision tree. बना दिया decision tree. अब दिमाग चलेगा. सो डिसीजन ट्री का डायग्राम बनाना है तो डिसीजन ट्री का डायग्राम बनना चाहिए लेफ्ट टू राइट. सो डायग्राम शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट कैलकुलेशन शुड बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Diagram from left to right, but calculations from right to left. So now the calculations will start from right to left. Are we understanding this? So अब कैसे करोगे calculations? So calculations guys, right to left चालू करो. So now I'm going to do the calculation of this decision. I'm going to do the calculation of this decision. ये चांस का कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं. ये चांस समझ रहे आपको? I'll repeat again. इसका कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं. ये चांस का कैलकुलेशन करने वाला हूं. ये चांस का. That is cash flow multiplied by probability, cash flow multiplied by probability, cash flow multiplied by probability. Tell me, are you clear with this? So guys, 1,75,000 multiplied by 0.05. It's 8,750. 55,000 multiplied by 0.15 plus 8,750. I'm getting a total of 17,000. And 75,000, which is minus multiplied by 0.8 minus 17,000. I'm getting an answer. I'm getting an answer of this chance as minus 43,000.
टेल मी जयश्री, टेल मी पायल, टेल मी रोहित, आर यू गेटिंग दिस आंसर एट -43,000? आपको समझा कैलकुलेशंस किसका कर रहा हूं मैं? अमेजिंग, फैंटास्टिक। मतलब जस्ट अंडरस्टैंड, आपने सॉइल टेस्टिंग कराया एंड सॉइल फिल्ड आया, तो अगर सॉइल फील्ड आ रहा है और हम इंस्टॉल करेंगे तो -43,000 का एनपीवी आएगा। बट अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो गाइस अब यहां पे डिसीजन लेने की बारी है। दिस इज वेयर वी टेक अ डिसीजन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द चांस कि अगर ये चांस लिया तो एनपीवी कितना आएगा, अगर ये चांस लिया तो एनपीवी 43,000 आएगा। बट अब आ रहे डिसीजन लेना है, तो डिसीजन क्या लेना है? इंस्टॉल करेंगे -43,000 आएगा, इंस्टॉल नहीं करेंगे -25,000 आएगा। सो व्हाट इज बेटर? -43,000 इज बेटर और -25,000 इज बेटर? व्हाट इज बेटर, -43 और -25? सो गाइस योर आंसर हैज टू बी, यहां का आंसर हैज टू बी सर -25 इज बेटर। मतलब हमने ये रूट काट दिया, मतलब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे। इफ वी डू द सॉइल टेस्टिंग एंड इफ द सॉइल इज फिल्ड, देन विल नॉट इंस्टॉल यार, बिकॉज इंस्टॉल कराने के बाद -43,000 आएगा और इंस्टॉल नहीं कराएंगे तो 25,000 का जो खर्चा हुआ है वो हो गया भाई, जाने दो। सो योर माई आंसर इज गोइंग टू बी 25,000 नेगेटिव। सो द डिसीजन यर दैट आई विल टेक इज दी सर, चलो 25,000 रुपया जाने दो, बस इतना चला गया है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। टेल मी, आर वी क्लियर? पक्का, कोई डाउट्स नहीं? टू गुड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जयश्री, नॉट टू इंस्टॉल। नाउ आ जाओ, अब ये चांस की वैल्यू निकालते हैं भाई, ये चांस की वैल्यू निकालते हैं, चलिए। सो आई एम टेकिंग अ डिसीजन ऑन दिस चांस। So guys, it is 1,75,000 multiplied by zero point 0.3, it's 52,500. 55,000 multiplied by 0.4 plus 52,500 is 74,500. And 75,000, sorry, 55,000 into 0.4 plus 52,500 is 74,500. And 75,000 into 0.3 minus 74,500 is 52,000 का डिसीजन आ रहा है मेरा। चांस का वैल्यू आ रहा है 52,000। Am I clear? Is this chance giving a value of 52,000 plus? Too good. Fantastic. So this chance is giving you a value of 52,000. I am also getting an answer of 52,000 as a value of this chance. Perfect or not? Perfect now. So guys, अब यहाँ पे आके डिसीजन लेते हैं कि क्या करेंगे। इंस्टॉल कराएंगे तो 52,000 और इंस्टॉल नहीं कराएंगे तो -25,000। सो लेट अस इंस्टॉल। सो विल इंस्टॉल एट 52,000, विल इंस्टॉल एट 52,000। सो यहां पे मैंने ये लाइन काट दिया, नॉट टू इंस्टॉल नहीं करेंगे। सो गाइस, इन सिंपल लैंग्वेज, इफ वी conduct a soil test, if there's filled soil, let's not install. If there is soft soil, let's install. If there is rock soil, अब rock soil की बातें करेंगे आगे। So guys, अब पहले ये चांस की वैल्यू निकालते हैं। So now this is 1,75,000 multiplied by 0.6 is 1,05,000. 55,000 multiplied by 0.3 plus 1,05,000, I'm getting 121,500. 75,000 into 0.1 minus 121,500, I'm getting an answer of 1,14,000. Tell me, are you getting an answer of 1,14,000 guys? Decision perfect now. So 1,14,000 का decision आ रहा है ये, and that is better. So guys, यहाँ पे भी हम इंस्टॉल करा ही लेंगे बिकॉज हमें एनपीवी 1,14,000 का मिलेगा, तो ये नो कट कर देंगे। मतलब डिसीजन इज वेरी क्लियर। If we conduct a soil test, if the soil is filled, not to install. If the soil is soft, install. If the soil is rock, install. Tell me, Chakas hai? Amazing, great, too good. Let's continue this और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं से, है ना? So guys, अब इसके लेवल पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा बात आएगा अब ये चांस की वैल्यू निकालनी है। So what is the value of this chance? So now the value of this chance is going to be here.
The value of this chance is going to be here. Tell me. Diagram from left to right, but calculations from right to left. So let us take the calculation of this chance. Minus 25,000 into zero point 0.3 is minus 7,500. 52,000 into zero point 0.4 is 20,800. 1,14,000 into zero point 0.3 is 32,400. So 32,400 plus 20,800, 32,000. मेरा कैलकुलेशन सेव आया हो गया है, मैं वापस कर रहा हूँ. 0.4 20,800 plus 20,800. I'm getting total of 55. 55 minus 7,500. I'm getting a decision ka value at 47,500. Are you getting a decision ka value at 47,500, guys? 47,500. Yes or no? So this is giving me a value of 47,500. So 47,500 is if I go test, then I can get an NPV of 47,500. Guys, अब ये chance की value निकाल लेते हैं. So ये chance की value 2 lakh into 0.2 is going to be 40,000. 80,000 into 0.3 is 24,000. 24,000 plus 40,000 is 64,000. Minus 25,000. I'm getting an answer of 39,000. I'm getting an NPV of 39,000. So I'm getting an NPV of 39,000. I'm getting an NPV of 47,500. And I'm getting an NPV of nil. So what should we go ahead? यहाँ पे decision लेना है. क्या करे? Test करे, test नहीं करे, कि install ही नहीं करे. Guys, test करते हैं. बिना टेस्टिंग के इंस्टॉल नहीं करते हैं और इंस्टॉल नहीं करने का डिसीजन भी रॉन्ग है. सो गाइस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? लेट्स टेस्ट इट. सो पहला डिसीजन है लेट्स टेस्ट इट. टेस्ट करके अगर फिल सॉइल आएगा तो नॉट टू इंस्टॉल. टेस्ट करके अगर सॉफ्ट सॉइल आएगा, टेस्ट करके अगर सॉफ्ट सॉइल आएगा तो विल इंस्टॉल इट. एंड टेस्ट करके अगर रॉक सॉइल आएगा तो विल इंस्टॉल इट. So guys, my decision is here. This is how the decision is taken on based of decision tree is let's do the test. After test, guys, if you get fill soil, then we'll not install. If you get soft soil, then we'll install. If you get rock soil, then we'll install. Now, this question can be there in your examination for 10 marks. You draw and you decide and you get 10 marks. Tell me, Chukas. Chukas? Too good. This is amazing. Perfect. Are you done with that? Lovely. Awesome. Great. Too good, guys. So guys, this is how we are going to take our decisions on the decision tree. I hope you all guys are understanding and catching this very beautifully well. Pakka na? Too good.
इज इट डन? चलो ग्रेट है, एक और क्वेश्चन हो जाए अगर आप लोग अलाउ करो तो। जकास। So guys, this was my question number कौन सा था? This was my question number 28 and then I'll go ahead with next question and guys this question number 28 के बाद आएगा question number 27. So let's pick up question number 27 अगर आप लोग ready हो तो. Can we? First one, question number 27 guys. So this is going to be my question number 27. Personal care products, that is PCPL, is known for its innovative beauty care products. The company's R&D has developed a new product named Nature, which can fit into a beauty care portfolio. Initially, PCPL is facing a decision whether to test market before launching Nature, which will cost 15 lakh. If the product is launched without test marketing, the probability of success is 0.6 and probability of failure is 0.4. If Nature is launched by PCPL and proves to be a success, the company's wealth in terms of NPV increases by 1 crore 25 lakhs before payment of test marketing expenses, while the failure will lead to the loss in terms of NPV at 62 lakh 50,000 before payment of test marketing expenses. Probability of positive result for test market is 0.52, while that of a negative result is 0.48. PCPL's experience shows that when a product is launched following a positive result, the probability of success is 0.92 and that of failure is 0.08. If the product is launched following a negative result, the probability of the success is 0.25 while the failure is 0.75. The second decision that PCPL faces is whether to sell the commercial rights of Nature to some other company. It can do so either before or after the test marketing. Selling the rights before the test marketing gives the company an NPV of 45 lakhs, while selling the rights after test marketing as outcome. If the result is positive, the company can get an NPV of 90 lakh before payment of test marketing expenses, and if it is negative, it will have an NPV of 2 lakh 50,000 before payment of test marketing expenses. You are required to draw the decision tree, which describes the sequence of decision, and to suggest an optimal decision if PCPL wants to maximize expected NPV. Full stop. Now, have a look at this question. You read this question once and try to fit the framework. PCPL is the name of a company, is known for its innovative beauty care products. The company's R&D has developed a new product known as Nature. So we are talking about a product known as Nature, which can fit into the beauty care product portfolio. Initially, PCPL is facing the decision whether to test before launching, and the testing is going to cost you 15 lakh. So test करना है launch करने के पहले कि test किए बिना ही launch कर देना. If the product is launched without testing, अगर launch कर दिया without testing, so positive probability of success is 0.6, failure is 0.4. Testing NPV. If it's success, your NPV increases by 1 crore 25 lakhs, but if there is a failure, you will lose 62 lakh 50,000. If you test, probability of positive result of test marketing is 0.52 and negative result. So testing का positive आने का probability is 0.52, failure का is 0.48. PCPL's experience shows that when a product is launched following a positive result, the probability of product success is 0.92 and that of a failure is 0.08. If the product is launched following a negative result, the probability of the success is 0.25 and that of a failure is 0.75. And there's one more decision now. The PCPL is facing a decision whether to sell the commercial rights. मतलब हम लोग launch ही नहीं करें, हम sell कर दें. तो यहाँ पे क्या है पता? यहाँ पे जो हमारा एक inherent decision है ना, not to launch, उसकी जगह पे हम not to launch की जगह पे यहाँ पे sell कर सकते हैं. If we don't launch, we'll sell. Because even selling the right can give an NPV of 45 lakh, and this can be done without before the test marketing or after the test marketing. While selling the right after test marketing as outcome, if there's a positive outcome, your NPV will be 90 lakhs before making payment of test marketing expenses, and negative results will have a 2 lakh 50,000. So Jayashri, if you're making a little bit of a framework in your brains, once again, I told you always have a little bit of a framework in your brains, and then we can start drawing it. Perfect है. तो अगर थोड़ा सा हमारा framework set हो गया तो हम चालू करें.
सबसे पहले कहां से इंसर्ट करोगे? टेल मी, जयश्री, आप बताओ सबसे पहले क्या इंसर्ट करें? एक डिसीजन नोट। And what is the decision that we are going to take? No test marketing. So this is launch without test marketing. This is how about testing? And this is not to launch की जगह पे मैं यहां पे डाल दूंगा sell. Not to launch की जगह पे हम लोग यहां पे डाल देंगे sell. Perfect ना? Too good? So guys, this is launch LAUNCH without testing. Here we test. जैसे ही टेस्ट करोगे तो आपका 15 लाख का खर्चा हो गया. And this is sell. Sell without testing. This is sell without testing. Perfect. After decision, let us introduce a chance node. Now this chance node, let us put some different color to it this time. How about putting a purple color? Purple अच्छा नहीं लग रहा मेरे को. Orange light रखते हैं, है ना? So एक chance node आ रहा है. अगर टेस्ट करने के पहले ही हम लॉन्च कर दे तो you can have success. You can have success or you can have failure. Or you can have failure. So guys, we can have a success or we can have failure. Success का probability without testing or test marketing. If the product is launched without test marketing, the probability of the success is 0.6 and failure is 0.4. So probability of success is 0.6 and failure is 0.4. Your NPV is 1 crore 25 lakh if the product is success, guys. If nature is launched by PCPL and proves to be success, the company's wealth in terms of NPV increases by 1 crore 25 lakhs without payment of test marketing expenses. यहाँ पे तो test marketing expenses नहीं करने पड़े थे. And while the failure will lead to loss in terms of NPV at 62 lakh 50,000. So guys, if there is a failure, you will lose 62 lakh 50,000. Tell me, am I clear with this? So if there is a success, you will gain 1 crore 25 lakh, but if there is a failure, you will lose minus 62 lakh 50,000. Are we absolutely fine? Too good. Acha, if you test now, so let's test. So if you test, there's a chance. If you test, there's a chance. Now what is a chance? Probability of the positive result is 0.52 and negative result is 0.48. So there's a chance. What is a chance that you will have a positive result or you will have a negative result? So this is positive result. This is negative result. इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं.
You can have a positive result or you can have a negative result. Are we exactly clear with this one? So guys, the probability of you having a positive result is 0.52, or you can have a negative result. The probability is 0.48. So if you test the product, पहले तो टेस्टिंग में 25 लाख नहीं 15 लाख रुपए चले गए, वो बात क्लियर है. 15 लाख ना भाई, हाँ टेस्टिंग करने में 15 लाख चले गए. तो टेस्टिंग कराएंगे तो वी कैन हैव अ पॉजिटिव, भाई मार्केट इज वेरी पॉजिटिव, और वी कैन हैव अ मार्केट इज वेरी नेगेटिव. पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी इज 0.52, नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी इज 0.48. अब प्लीज एक बार और याद रखना कि चांस के बाद चांस नहीं, प्लीज चांस के बाद आना चाहिए फिर से डिसीजन. सो अब टेस्टिंग कराने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम एक डिसीजन लेंगे. भाई ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, चांस नोड एंड डिसीजन नोड. प्लीज एग्जाम में और कोई ड्राइंग मत करना. इट्स रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट दैट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप ब्लॉक्स आर decision nodes and circle is chance node. So there is a decision, and what is a decision? Whether to launch or not to launch नहीं बोलूंगा, whether to launch or sell. Launch और sell. So यहाँ पे मैं ड्राइंग करूंगा whether we should launch or we should sell. Whether we should launch or sell. Similarly यहाँ पे भी आना चाहिए वही डिसीजन, whether we should launch or we should sell. Sell. Perfect. Now, if I launch, I will have a chance of success. I will have a chance of failure. So this is a chance. This is a chance. I hope you guys are catching this up very, very well. Jashi, is it going very fine? So now we'll have a chance. Chance of what? Success or failure. So this basically is sell. This basically is sell. Are we exactly clear? Now guys, if we sell, the second decision that PCPL faces whether to sell the commercial rights of nature to some other company. It can do so either before or after the test marketing. Selling the commercial rights before the test marketing. Test marketing करने के पहले ही बेच दिया तो NPV 45 lakhs आएगा. तो टेस्ट मार्केटिंग करने के पहले ही बेच दिया तो NPV 45 lakhs आएगा. और एनपीवी टेस्ट कराने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद बेचा तो 90 lakhs बोला है, बट दिस इज बिफोर द पेमेंट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, सो इट विल नॉट बी 90 lakhs, इट विल बी 75 lakhs. वाई 75 lakhs? बिकॉज 90 लाख में से 15 लाख रुपए टेस्टिंग के चले गए हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सेल इट फॉर 2,50,000, सो इट विल नॉट बी 2,50,000, इट विल बी minus 22 lakh, minus 12,50,000, minus 12,50,000. Why minus 12,50,000? Because guys 2,50,000 का तो एनपीवी आएगा बट 15 लाख का टेस्टिंग चला गया. टेल मी जयश्री, आर वी क्लियर विद दैट? Too good. Okay, but if the answer is positive, then guys we can again have a success or we can have a failure. So this is success, this is failure, this is success, or this is failure. Is it classic guys? Perfect now? Too good. So guys, now we have a success and we have a failure. So if the result is positive, success is 0.92, failure is 0.8.
So success is 0.92 and failure is only 0.08, but definitely because the answer is positive. So this is launch and sell. This is launch and sell. The success here is going to be only 0.25. अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो माई सक्सेस इज 0.25 एंड फेलियर इज 0.75 and the failure is 0.75. Do you agree with this? Tell me yes or no, guys. एकदम परफेक्ट, टू गुड. मेरा एनपीवी कितना है गाइस? सक्सेस का मेरा एनपीवी था 1,25,00,000, बट 1,25,00,000 में से 15 लाख रुपीस टेस्ट मार्केटिंग के लिए चले जाएंगे. So this will be 1,10,00,000. I hope you guys are catching this up. This is 125 minus 15. And here my NPV will go more negative. That is 62.5, guys. Plus 15 is minus 77,50,000. Minus 77,50,000. This is minus 62.5 minus 15 का खर्चा हो रहा है और भी. So guys, यहाँ पे भी मेरा NPV आ जाएगा 1,10,00,000. और यहाँ पे मेरा NPV आ जाएगा minus 77,50,000. Tell me, are you guys catching this up brilliantly? Amazing. इसके बाद एक और क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29. That question is so too good, guys, too good. That question is so famous. बहुत बार आ चुका है पहले एग्जामिनेशन में, बहुत बार. Jayashree, done till here? Too good. Okay. Now this is done. डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब डायग्राम के बाद हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेशंस करने हैं. सो डायग्राम शुड बी ड्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड कैलकुलेशन शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डायग्राम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बट कैलकुलेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो गाइस, 1,10,00,000. 1,10,00,000 into 0.92 into 0.92, that is 1,01,20,000 and minus 77,50,000 multiplied by 0.08, it's minus 6,20,000. Minus 6,20,000. 1,10,00,000 into 0.92 minus 6,20,000. Guys, I'm getting 95 lakhs का chance का value. 95 lakhs. So the value of this chance is 95 lakhs. चलो यहाँ पे आके डिसीजन लेते हैं गाइस. 95 लाख लेंगे या 75 लाख लेंगे? सेल कैंसिल कर देते हैं, 95 लाख ले लेते हैं. So my decision, if the result is positive, I will launch, I will not sell. Jakas hai? Guys, 1,10,00,000 multiplied by 0.25 is 27.5 minus 77.5 into 0.75, 58.125, 110 into 0.25 minus 58.125. I'm getting minus 30,62,500. माइनस 30,62,500 इसकी वैल्यू आ रही है. ये चांस की डिसीजन माइनस 30,62,500. So guys, are you going to launch or sell? Guys, minus 12,50,000. So I'm not going to launch, I'm going to sell. So if I sell, I will have a value of minus 30,62,500. Sorry, minus 12,50,000. So this is minus 12,50,000. Tell me, am I going to catch this up very well? पक्का? कोई doubts नहीं? Clear? Too good. Jakas. Great. चलो आगे बढ़ते हैं. So what is the next thing that I am going to catch up with? This is done. अब guys आ जाता है ये चांस के वैल्यू निकालने के लिए. So ये चांस की वैल्यू निकाल रहे हैं. So we have 95 lakhs multiplied by 0.52 is 4940.
12,50,000 into 0.48 minus 4940 is 43,40,000. Is 43,40,000. I'm getting a value of 43,40,000. Do you agree with this? This is 43,40,000. Guys, this is 43,40,000, whereas this is giving you 45 lakh. So 43,40,000 पे क्यों जाए? 45 ज्यादा अच्छा है. और अब उसकी वैल्यू निकालते हैं. 1 crore 25 lakhs, guys, into 0.6 is going to be 75 lakhs. 62.50 into 0.4 minus 75. Guys, I'm going to get a value of 50 lakhs. Value of this is 50 lakhs. So guys, I'm not going to take 45 lakhs also. This is also cancelled. So the only decision is launching without the testing. So guys, यहाँ पे आ गया मेरा decision. And what is the decision that I'm going to work on is launch without testing. Tell me that you are doing good. Launch without testing. Are you getting that answer of launch without testing? Amazing. Fabulous. Decision tree easy लग रहा है अभी. Diagram from left to right. Calculations from right to left. Decision के बाद decision नहीं. Chance के बाद chance नहीं. After every decision there should be chance. After every chance there should be decision. And one decision, coherent decision, is not to launch. चिकास है. So good. Great. As usual, मैं एक क्वेश्चन रहने दूंगा डिसीजन ट्री के अंदर, एंड दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 29. मैग्ना ऑयल का क्वेश्चन है. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैग्ना ऑयल का क्वेश्चन करेंगे, और आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है मंडे को. ठीक है. थैंक यू. फैंटास्टिक. टेक केयर. बाय बाय. लव यू गाइस.